Hello, ladies and gentlemen. The children growing up too fast and the adults refusing to age. It's a world where everyone wants to be perfect. As in 2023, we all want to be the best version of ourselves. I'm Atika Farooqui. We are in this journey together. And this is now showing the window to the real world of quality entertainment. Let's start with a sneak peek into what lies ahead. Bloody Daddy is a chic crime thriller with fabulous action scenes and a lot of edgy humor. Sara and Kartik on how do they invest their money, the perks of being in this profession and so much more. Arjun Kapoor talks about that one film that changed his life. And DJ Wale Babu Mera Gana Chala Do singer fame Aastha Gill on her new single. Let's talk about Bloody Daddy that releases on Jio Cinema. It's an action thriller film directed by Ali Abbas Zafar, who co-wrote the film with Aditya Basu and Siddharth and Garima. It's the adaptation of 2011 French film Sleepless Night, which itself was remade in Tamil as Thunga Vanam in 2015 with Kamal Hassan. Sumer Azad is an NCB officer who, along with his team in Gurugram, cracked down a drug dealer, leading the drug lord Sikandar to kidnap Sumer's son, Atharva, in exchange for retrieving a bag of cocaine. It's a story of a daddy who gets really bloody in a fight with gangsters and may not mollycoddle his son, but will go to any length to get his kidnapped son back. It features Shahid Kapoor, Sanjay Kapoor, Diana Penty, Ronit Roy, Rajiv Khandelwal as pivotal characters in a nexus between the NCB and drug lords. The tone is wacky. There is one entire day of playing with knives and guns, black humor, grey in relationships and also officers that are honest yet corrupt. Cinematography by Marcin Lascewis and editing by Stephen H. Bernard gives the film an edge-of-the-seat experience where you blink an eyelid and miss the scene. Warning, there isn't a story unfolding every 15 minutes or something sharper and crisper. Things may be a little predictable, but they are very enjoyable. Director Ali Abbas Zafar indulges in humor as smoothly as he attempts thrills and killings. One violent and savage brawl scene between Rajiv Khandelwal, the corrupt cop, and Shahid in the kitchen of a luxurious hotel with fists and knives and those metals all around is kinda really sexy. Action directors Craig McRae, Pervez Sheikh and Lee Whitaker execute all the action scenes keeping in mind the optics of a visually stylish film. The human story between the evolving state of marriages and parent-child relationship is so lifelike that you feel relieved about the modern-day writing of content these days. It's real. The boy is hooked to the phone, wants his lactose-free milk and gluten-free bread even when he is in captivity. A balance of witticism, comicality and action is what makes this film, Bloody Daddy, quite unique. Watch it on Jio Cinema. Sara Ali Khan and Kartik Aaryan are two actors who enjoy a lot of young followers. It's important to know what's their idea of a good life, what's the purpose of fame, how do they invest their money, what are the perks and the disadvantages of being an actor. I had a ball of a time chatting with them about their past, present and future and what lies ahead for these actors. Your family is full of stars. Sharmila Tagore ji. No, I'm coming to that. Amrita Singh ji, your father Mr. Saif Ali Khan, and even your Dada, Mansoor Ali Khan Pataudi साहब, ये अपने फील्ड में स्टार्स थे. आप अपने आप को बतौर एक्टर ज़्यादा देखते हैं या you want to be recognized as stars? आज के ज़माने में स्टार्स नहीं रहे. एक जो एनिग्मा होता था स्टार्स का, एक हद तक ऐसे होता था कि आप उन तक पहुंच नहीं सकते. उससे स्टारडम मुझे लगता है पुराने ज़माने में होती थी. आज के ज़माने में वैसा है नहीं. सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं.
तो मैं स्टारडम में ज़्यादा बिलीव ऑनेस्टली नहीं करती, और मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में एक्टिंग इज़ द ओनली थिंग दैट काउंट्स। चाहे वो हमारे ब्रांड्स हो या हमारे लुक्स हो, वो उसमें मज़े भी आते हैं, उसमें पैसे भी बनते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है दैट इवेंचुअली वी आर हियर टू एक्ट। मैम मेरा पैशन है एक्टिंग, मतलब मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ और बहुत मज़े से एक्टिंग करता हूँ। मेरे अंदर वो हमेशा एक सेट पे जब जाता हूँ या उससे पहले की जो प्रेप होती है, एक आंखों में एक अपने आप एक वो चमक आ जाती है जब एक्टिंग, एक्साइटमेंट आ जाती है जब मैं एक्टिंग का सुनता हूँ तो और वो बहुत शुरू से ही है। गली गली में छोटे छोटे बच्चे तक मेरा नाम जाने कार्तिक आर्यन, वो मैं चाहता हूँ। अच्छा। मैं उससे शायद भी नहीं करता कि मैं वो नहीं चाहता। हालांकि काफी चीजें बहुत सेकेंडरी इसके साथ आती हैं और उसको लेकर वो मेन चीज ना बन जाए आपके दिमाग में, वो आई थिंक वो काफी लोगों के लिए करियर एंडिंग हो सकता है। Stardom is like the background music to your film, you know. Yeah. It's very important. सामने नहीं आना चाहिए. It's very important, but it shouldn't become a music video. Yeah. Wow. Exactly. How beautiful. Yeah. Correct. Okay. Correct. मैंने शुरू में कहा कि आप क्या बात, देखो पढ़ा लिखा कोस्टर ऐसे बात करता है। बोला। This is Columbia speaking. This is Columbia speaking. अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक बहुत बड़े ब्रांड ने अपना यूथ को लेके एक एड था वो वापस लिया, विड्रॉ किया, क्योंकि उसमें किसी एक बॉय को, यंग बॉय को, he was shown as very reckless and irresponsible, and there was a backlash against it from boys and girls who said, hello, हम ऐसे नहीं हैं। आप उसी फेज से होकर अभी गुजरे हैं, कॉलेज से निकल के आए हैं। What do you think, यूथ कैसे सोचता है? बहुत ऑनेस्टली सोचते हैं, बहुत हर चीज़ बहुत रियल सोचते हैं, या फिर फॉरवर्ड सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें, जहाँ पे हैं वहीं पे ना स्टैग्नेंट ना रहें, और आगे की सोचते हैं। तो आई रियली फील दैट कोई भी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे दर्शा भी रहे हैं तो उसमें भी एक वॉइस सबकी होती है, और वो बहुत ज़रूरी एक जो वॉइस की और एक नोट किए जाने वाली एक जनता है कि सब चीज़ें सब सुन रहे हैं और सब देख रहे हैं और सब एक्ट भी कर रहे हैं उस हिसाब से। वो बस किसी भी फ्रिवलेस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते हैं। आई रियली फील कि कहीं ना कहीं हम अपने ओपिनियंस वॉइस आउट करते हैं आजकल, एंड हम कहीं ना कहीं यूथ, एज अ यूथ हम बहुत आगे की सोच रखते हैं। आई थिंक दैट जितना ही ऑडियंसेस को सोचना अच्छा लगता है, उतना ही ऑडियंसेस को एंटरटेनमेंट भी अच्छा लगता है, तो दोनों का मिश्रण मुझे लगता है जरूर। तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम जनरेशन ही नहीं है, ये खालिल जिब्रान और ट्विटर जनरेशन भी है और यूट्यूब जनरेशन भी है, सोचते हैं, समझते भी हैं। Okay, so that's a big myth broken here. जब मैं नई आई थी तो लोग कहते थे कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, बैठने का ऐसा तरीका होना चाहिए, उठने का ऐसा तरीका होना चाहिए, ज्यादा सवाल मत पूछा करो, ये कोलंबिया नहीं है, यहाँ पे आप हीरोइन हो, ज्यादा पूछो मत, जो बोला जाए वो करो। Up until that level, I almost am realizing that I shouldn't be saying what I'm saying, but I'm saying it anyway. Words like "aap heroine ho," yours is not a thinking job. What does that mean? I mean, we're actors. We are supposed to play characters. How do you want us to do that if we don't think? आज के ज़माने में जितना ओरिजिनल आप रहो, जितना ऑर्गेनिक आप रहो और जितना ऑनेस्ट आप अपने आप के बारे में रहो, उतना दिखेगा और वो अप्रिशिएट होगा। मैं अभी विदाउट कोई शोशा के एक फोटो डालूंगा और फुल उसमें कितने लाइक्स आएंगे और कितना एक्सेप्टेबल, और एक मेड अप, मैं भी बोलने वाली थी, I was going to interrupt him with the filter. I say #NoFilter is actually appreciated, whether it's your look or your words. Yeah, it's just appreciated everywhere. So people go for real things. Because they can tell now. They can tell. I'm glad you made this point, क्योंकि ये point कहना जरूरी है कि come out of the artificial life, reality is much more. किसे पसंद है? Nice. Now I'm coming to quick questions. Questions millennial style. Millennial style. What is the meaning of your name? Everything. Everything. कार्तिक एक्चुअली मैंने गूगल किया था एक दिन, और दूसरी बात ये, पहले तो मुझे पता था महीना होता है, एक मंथ होता है कार्तिक महीना, इसके बहुत सारे मीनिंग्स है। कार्तिक महीना, कार्तिक गॉड भी है, भगवान है, और एक कार्तिक का मीनिंग गूगल में आया था गॉड ऑफ वॉर। मैं लड़ाइयाँ क्रिएट करता हूँ। अरे नहीं। ये गूगल में ये आता है जब मैं ढूंढता हूँ। God of war. Yeah. Maybe the god of introspection and. I don't know. I don't know इसमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढूं, मैं समझ नहीं पा रहा था। सेट पर टेक देने से पहले ये काम आप नहीं करना पसंद करते? I don't like to hear the word start sound. It makes me nervous. तो एक्चुअली टेक के बिल्कुल पहले ही, मतलब like right before, I already start saying the line from before the part where you need it, so that you're in the scene when you start. How would someone get your special attention, Kartik? जब मैं आप पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ और आपको वो पता है। अच्छा। Play pricey, Sara. Hi. Just a hi. How nice. Okay. Royal family के बारे में एक बड़ी myth क्या है?
कि अभी एग्जिस्ट करती है, ऐसा है नहीं। 1947 के बहुत बाद रॉयल्टी खत्म हो गई थी। You can be royal in your mind, but that's it. Would you date a fan? Why not? Who takes more retakes? Sara. What is the most annoying habit of Kartik? I think he can go on and on about the same thing. Okay. Where did you first meet Kartik? At Karan Johar's balcony. Nice. जोहर की balcony. सच में? करण जौहर की कॉफी। ये दुनिया आजकल करण जौहर के चारों तरफ घूम रही है। क्या करें? काफी सालों से करण जौहर के आसपास ही घूम रही है। Kartik's favorite romantic film? The Notebook? The Notebook? I think so. Okay. First thing Kartik notices in a girl. He said eyes. Okay, Kartik, Sara's Bollywood crush. It's your turn to answer. Don't look at me. Kartik Aaryan. Oh wow. What is the most annoying habit of Sara? She talks at the wrong places and she shuts at the right place. बोले तो गलत जगहों पे गलत बात बोल देगी, आजा सही जगहों पे सही नहीं बोलेगी। Politically incorrect हो जाती है कभी-कभी। First thing she notices in a guy. Smile. Okay. That's true. Okay. Who's your inspiration from your family? Mom. Who's your inspiration from your family? Mom. Do you speak any other language? हिंदी, इंग्लिश, थोड़ी बहुत मराठी, थोड़ी बहुत Little bit of Urdu, but very little. अपने कमालो ज़ब्त को खुद भी आजमाऊंगी। जैसे इतना नहीं। मैं अपने हाथों से दुल्हन सजाऊं। जैसे ये ज़्यादा हो गया। ये समझ आ जाता है। Okay. बोल नहीं पाएंगे। Okay. If you want famous, what would you be doing right now? I would be directing. Who is the craziest person you know? I think it ties between me and my mother. I know. What is one life lesson that you would want to share? ये सीखा आपने जिंदगी से। Never lose hope. Nice. Finish this sentence. I wish I were more. I could be more sure. Oh, so you have double-mindedness problem. No, sometimes. Okay. I think a lot. I wish that could stop. Advice you would give to your 12-year-old self. कहाँ थे आप जब 12 साल के थे, कार्तिक? मैं ग्वालियर में था। ग्वालियर में था। बेटा टेंशन मत ले, तेरा सपना पूरा हो जाएगा। हिंदुस्तान की किसी भी 12 साल की लड़की को इस वक्त आप क्या कहेंगे? पढ़िए। Nice. आप हिंदुस्तान के किसी भी 12 साल के लड़के को क्या कहेंगे? मैं भी सेम ही चीज बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान दो। Okay. What scares you the most? That there'll be a time where I would lose touch with the reality. What do you do with the money you make? I'll spend on Investment, property, stock market. मैं जितना पैसा कमाऊंगा उतना ही पैसा फिल्मों में लगाऊंगा। Nice. अच्छा बंदा है investment में। Okay. If you were a flower, which flower you would be? Rose, I have thorns. Your answer to paid trolls. पैसे कहीं सही जगह पे लगाओ। News कैसे consume करते हैं आप? Long format, short format? I think short format most of the times. What's the method to finding true love? Being true to who you are. Okay. What are the disadvantages of being famous? You are unable to find maybe true love And friends. and friends, true love in whatever sense. Yes. I mean, Right. friendship or love. Social cause जिसके साथ आप एक दिन जरूर जुड़ेंगी. I think education for those that can't afford it. Very nice. Should celebrities be role models? They should be. What do you watch on internet? Various different kinds of things. आपका वो कौन सा टैलेंट है जो अब तक यूज नहीं हुआ है? I think my dancing ability इतना ज़्यादा use नहीं हुआ है। Okay. What is your biggest blunder in the kitchen? Going into the kitchen. No, I cook a lot, but मैं मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बार काले नमक की जगह काली मिर्ची डाल दी थी कहीं पे, तो वो ऐसा कुछ। Imitate your English teacher. बड़ा बड़ा डब्बा। What was the last lie you said? पिछला झूठ ये बोला था कि मैंने बोला था I'm on my way. When I wasn't. मैंने भी एक्चुअली यही बोला था मैं 5 मिनट लेट हूँ बस। And you were 50 minutes. 20 मिनट हो गया। How do you start a conversation? By looking into someone's eyes. Who's your hero in the world history? महात्मा गांधी। Yes. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, yeah. Great. Great. All the best to you guys. Thank you. आप लोग बहुत hopeful future हैं हमारे इंडस्ट्री का. Thank you you. for being very honest. And Kartik, you're such a fresh face and fresh talent. We look forward to more Thank you, sir. from your Thank you, statement. ma'am. Thank you. Time for a short break. When we come back, we have actor Arjun Kapoor talking about that one film that changed his life, and singer Aastha Gill, Unplugged.
You remember that song? DJ Wale Babu, mera gana chala do, gana chala do. Sometimes so I remember that even I asked a DJ ki bhai mera gana chala do. That is the power of one hit song. So that girl is on the other side of the break. Don't go away. Welcome back to Now Showing. I'm Atika Farooqui. Actor Arjun Kapoor, who will be next seen in director Ajay Bahal's The Lady Killer, says it was Guy Ritchie's 1998 British black comedy that changed his life. He spoke to my colleague Vishal Chatkara about how that film made a huge impact on him. Well, the one film that really changed my life was Lock, Stock and Two Smoking Barrels. I remember I was in 10th standard. I was a lost cause. I didn't know what I wanted to do with my life, and watching that film made me choose filmmaking as a profession. The push and the thrust towards telling stories or being part of stories came from watching Lock, Stock for the very first time. My love affair with cinema started because of Guy Ritchie, so I will always be grateful for that. I remember watching it literally by mistake on a DVD one night, and I couldn't sleep. Just the sheer banter, the conversation, the storytelling, the direction, the energy, how kinetic the shot taking was. You almost felt like you're part of the camaraderie between those four people. The characters, I mean, just purely having such eccentric characters in modern day England, for that matter, to see such a fascinating story being told about just money. Four loser friends, not knowing what to do, they decide to take a chance and go gamble with these so-called gangsters, and they make an absolute mess out of the situation and come back worse off, and all their life savings are gone. So it was a very, very relatable premise because of the friendship element, because I was in 10th standard. Friendship is everything when you're growing up in school. And of course, I think it has one of my favorite action heroes in Jason Statham, who's just become the coolest action hero of our generation after that. Having Vinnie Jones, the footballer, making his debut. I mean, there's a body rig shot where he's lost all his money, where you can see him walking and you see flashes of him going. That body rig is today used in India. And of course, just the editing. It was very sharp, very sharply edited, very dialogue to dialogue, very visual to visual, very sharp for its times. Normally films had a meandering pace. This one was tuck, 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 tuck. There was a rhythm to his edit. In my vanity van, there's only one poster which stands out, and that's Lock, Stock and Two Smoking Barrels. In my room, there is a poster of Lock, Stock and Two Smoking Barrels. It's safe to say I'm a very big fan of Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Proper patola, nakhrai swag, suit patiyala, shahi chunni teri black, oh munde ho ke da 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 da. Remember Aastha Gill, who used to collaborate a lot with Badshah, is on her own now. She's come out with a new song, and she talks about how she gets an idea about songs like Nagin and Buzz and Proper Patola and many other songs in this interview with my colleague Vishal Chatkara. तुम हो तो खामोशी में बातें हैं, तुम हो तो जीने के इरादे हैं, आए ना तेरे बिना चैन आए ना क्यों. Oh, nice. What a lovely voice you have. Thank you so much. It's been a while when you released the song. Yeah. And now you're back with a new single. This Yeah. one is titled Kyun. Yeah. So आपने इतना इंतजार क्यों करवाया अपने फैंस का? तो ये एक्चुअली इसकी स्टोरी है कि आफ्टर एवरी सॉन्ग, अभी क्या है, एक गाना रिलीज होता है, महीना उसका प्रमोशन जाता है, एंड देन एंड ऑफ लास्ट ईयर वाज लाइक माय पीक सीजन फॉर शोज. So during that time, it's so difficult to work on a release, you know, new release. I literally had to take a 2 months off to plan this. So then, be DJ Wale Babu, Buzz or Nagin, these songs have some great hook lines. Yeah. How do you arrive at these quirky lyrics, and how good are you with the words? Oh, I'm very bad with words, but I'm very good with ideas, I would say. Whenever I sit in a room when we work on a song, तो वो आइडियाज़ मेरे ही होते हैं जितने भी होते हैं. नॉट नागिन, नागिन इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज दैट वाज आई थिंक वायु's
utpatang idea which worked. Which ideas? Would you please like to elaborate more on that? Like Buzz. Okay, Buzz में बादशाह भैया ने मुझसे पूछा कि यार हम so we were working on this song and उन्होंने पूछा कि तुम लड़कियां क्लब जाती हो, वहाँ कोई हॉट सा लड़का दिखे तो हाउ डू यू लाइक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या करते हो, क्या चलता है दिमाग में. सो आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि ऐसा दिमाग में चलता रहता है, नींद नहीं आती है, ये होता है. सो यू नो मेरे को एक लड़का दिखा था एक बारी, उसकी आंखें बहुत प्यारी थी और वो बस उन्होंने लिरिक्स में पिरो दिया उन बातों को. सो लाइक दैट. कैसे? ट्रिपी है आंखें तेरी, घुंघराले बाल हैं, चलता जैसे सब उसके बापू का माल, और जब कमर पकड़ के खींचे है दैया पैरों के नीचे मेरे, रहने तू जमीने ना दे, मीने ना दे, तेरा बस मुझे जीने, सो तेरा बस मुझे जीने ना दे. इज लाइक मैंने उनको बोला कि हम सोचते रहते हैं घर जाके भी, तो एक वो रहता है दिमाग में रहता है बस सा. As an artist, which language or dialect of Hindi you think you have a good command on? पता नहीं, I think इंग्लिश पे है मेरी कमांड, हिंदी पे है कमांड, दिल्ली वाली हिंदी बेसिकली. दिल्ली, इट्स नॉट इवन उर्दू ना, इट्स लाइक दिल्ली हिंदी. दिल्ली हिंदी में तो आधी इंग्लिश मिक्स हो जाती है. देख के तुझको दिल बोले हाय हाय, तेरे बिना हाल मेरा बुरा होता जाए जाए. या और कौन सा? प्रॉपर पटोला इज आल्सो हिंदी. मुंडे आवे तेरे बस दी नहीं कर, ना नच मेरे नाके तू क्लोज, हाँ चल पतली गली से तू निकल, तेरे जैसों को रखती हूँ ऑन टोस, क्यों बोले लाए तू, ना करे ट्राई तू, जा जा तू बेटे घर जा. प्रॉपर पटोला, नखराई स्वैग, सूट पटियाला चाहिए चुन्नी मेरी ब्लैक. Aastha, there's a quote about creativity by this American author called Austin Kleon. Okay. He said that creative people need to sit together and do nothing. How do you relate to this? I do relate to this actually. This actually makes a lot of sense. Because sometimes you get a lot in nothingness. We can clearly see a shift in your career choices. Yeah. You know, for a long time you were associated with Badshah, and you were, because you were of course collaborating with him a lot. Yeah. And you actually have given some of the biggest hits of your career yeah. with him. And now lately you also collaborated with Kumar Sanu. When and how you decided to part ways with Badshah? We haven't parted ways as such. It was always the plan. अब कभी ये नहीं सोचा था कि I'll just stick to him. कहीं ना कहीं मुझे था कि मेरे को और भी collaborations करनी है. And when कुमार सानू जी का ये बात उठी थी ऑफिस में, तो I was so excited and nervous, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि कभी मैं ये दिन देखूंगी अपनी ज़िंदगी में. ये करियर शिफ्ट बाय चॉइस आया है ऑब्वियसली, और हो सकता है कि बादशाह पे मेरा गाना दोबारा आने वाला हो. हौसले बेले पाके वो पलम तोड़ दे भरम, छोड़ दे घबराना, बजाए तो ये दूर से हॉर्न क्या, दिल के सारे बटन खोल दे, खुल के बोल दे, सह में रही हो ना, बता दे तेरा आज है प्लान क्या. I learned that everything is temporary. I believe that arrogant go down faster. I'm convinced that karma comes back at you. And I recommend that all of us be unique so that we never have to copy or be like anyone else. I'm Atika Farooqui saying goodbye to you. Next time we meet, I don't want to see that remote in your hand. It gives me anxiety. Just chill and watch. Now showing every Saturday, every Sunday. See you again. Ta-da.